everyone. So today we're going to start a new chapter. The name of the chapter is An Honest Woodcutter. So let's begin the chapter. Chapter 5, An Honest Woodcutter. Honesty is a divine virtue. Value talk. Honesty and truthfulness are a facet of moral character that cannot positive and virtuous attributes such as integrity, truthfulness, and straightforwardness, along with the absence of lying, cheating, theft, etc. So, agar we are honest, we should be truthful, we should be honest, and that should be in our character. Because अगर हम honest रहेंगे तो हमारी positivity बनेगी. और हमें कौन कौन से attributes को adopt करना चाहिए? We should be truthful, we should be have integrity, और straightforwardness होना चाहिए. कि अपनी बातों को रख सकते हैं, अपनी बातों को सीधे कह देना, घुमा फिरा के बातें ना करना. We should not manipulate the things. Instead of lying, cheating, and doing any kind of theft, so we should be truthful. And you should always be positive if you are honest to yourself and if you're honest to others. Let's start the story. Once upon a time, there lived a poor woodcutter. He was very hardworking. एक बार की बात है, एक बहुत ही गरीब woodcutter था. वो बहुत मेहनत करता था, बहुत hardworking था. He used to cut wood in the dense forest every day. अब वो घने जंगलों में जाता था लकड़ियाँ काटने रोज. One day he was cutting wood on the bank of a river. एक बार वो रिवर बैंक पे गया और वुड्स को काट रहा था. एक्सीडेंटली ही ड्रॉप्ड हिज एक्स इनटू द रिवर और लकड़ी काटते काटते उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो पानी में गिर गई. बीइंग हेल्पलेस ही क्राइड एज ही हैड नो मनी टू बाय अनदर एक्स. अब वो हेल्पलेस हो गया क्योंकि उसके पास ना नई कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे नहीं थे. देन अ काइंड फेरी अपीयर्ड फ्रॉम द रिवर होल्डिंग अ गोल्ड एक्स इन हर हैंड. फिर एक फेरी आई पानी में से निकल के जिसने गोल्ड कलर की कुल्हाड़ी उसके हाथ में थी. She asked the woodcutter, I found this egg in the river. Is it yours? उसने उस वुडकटर से पूछा कि ये कुल्हाड़ी मुझे रिवर में मिली है, क्या ये तुम्हारी है? वुडकटर replied, No fairy, this egg is not mine. उसने कहा नहीं, ये मेरी नहीं है. The fairy went down again into the river and came back with the silver eggs. She again asked the woodcutter, Is this silver egg yours? The woodcutter said, This too is not mine. फिर से वो दोबारा पानी में चली गई और एक सिल्वर एक्स निकाल कर लाई. तो उसने उससे वुडकटर से पूछा, क्या ये एक्स तुम्हारी है? उसने कहा नहीं, ये भी मेरी नहीं है. एट लास्ट द फेरी केम आउट ऑफ द रिवर विद द वुडन एक्स. और फाइनली वो जब दोबारा निकल कर आई तो उसने एक हाथ में एक वुडन एक्स थी. व्हेन द वुडकटर सॉ हिज एक्स ही बिकेम हैप्पी. जब उसने अपनी लकड़ी की वो देखी कुल्हाड़ी तो वो खुश हो गया. ही हैप्पीली टुक द एक्स एंड सेड, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग माई एक्स बैक. उसने उसको थैंक यू बोला और वो बहुत खुश हुआ और उसने अपनी कुल्हाड़ी को वापस ले लिया. The fairy felt happy at the woodcutter's honesty. She rewarded the woodcutter with all 3 eggs for his honesty. और वो उसकी honesty से, उसके सच बोलने से बहुत खुश हुई और उसने बाकी की दोनों eggs भी उसको दे दी. So the moral of the story is, truth and honesty are the true characteristics of a person. Let's do the exercise. First we will do tick the correct option. The woodcutter was poor. The woodcutter's dash dropped into the river. Woodcutter's eggs. At first, the fairy was giving the woodcutter was a gold eggs. At last, the fairy came out of the river with a wooden eggs. The woodcutter became happy. Now, let's do the fill in the blanks with the words given below. There lived a poor woodcutter. He became dash as he had no money to buy another eggs. He became sad. No fairy, this is not mine. This eggs. When the woodcutter saw his eggs, he became happy. He awarded the woodcutter with all 3 eggs for his honesty. Now let's do match the opposite words. Poor, rich, dense, scattered, buy, sell, happy, sad, and honest, corrupt. Now let's do complete the words. This is fairy, wood, rewarded, honesty, dense, and happy. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again, and you all should be honest to yourself and you should be honest to others too. We'll meet in the next video with the next chapter and the next lesson to be learned. So we'll meet in the next video. Till then, bye-bye. Take care.